that starting में बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी. Suddenly I started walking very slow. You cannot give this to my baby. The susu goes directly on his face. आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स चेंज हो रहा होता है. Exactly. सब कुछ हो रहा है. अभी इमोशनली इतने वल्नरेबल हो जाते हो Very. कि हमने कोविड में देखा ये चीज़ कितनी ज़्यादा कि जो फैमिलीज अकेले थी, you know, the COVID babies, the COVID mothers, but they faced depression, postpartum depression, anxiety so much because they were alone. Wanted to go for normal delivery, but my gynecologist said, the way she said, पागल हो क्या, इतना healthy बच्चा, you'll die. आपकी आइडेंटिटी अलग है, बच्चा आपका अलग है ना. आपको केयर करनी, बट उसको इतना भी अपने ईगो से नहीं जोड़ना है कि जैसे आपने कहा कि आपकी मेंटल हेल्थ कहीं भी थी एंड यू वर जस्ट केयरिंग फॉर द किड. टुडे वी हैव विद अस अर्चना सिंह, अ न्यू मॉम. और जैसे कि हम अपनी मदर की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग today we'll be talking with Archana about her journey, about her experience of motherhood. So welcome Archana ji to our channel. Thank so tell me something about yourself first. आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा. So obviously I'm a mother, and of late, like 3-4 years back only, I have started my influencing journey. Yeah. Because I don't want to leave my kid at home. Yes. To somebody else. I wanted to take care of him on my own. Yeah. And now he's 5, so probably very soon I too will be getting back to my business. Work, yeah. Yeah. So how hard it is to work with the kid, like, you know? I wouldn't just say कि it is just the hard part. Yeah. Obviously it is both fun and Yes. it is also very tiring. Yes. Overwhelming. Yeah, but I mean in general I'm enjoying my motherhood journey. Yes. So how was your pregnancy when you had him? as we were discussing before, like I got married quite early. Yeah. At my age, so I decided not to bring the kid until I am mature enough and I could mentally take care of other person. I think this is very important. Lot of patients come to my OPD and they're like, "Man, what is the right age of getting pregnant?" True. I'm like, ठीक है, right age physically भी important है, but mentally also it is very very important. Yes. If you are fine mentally, financially, if you think you are set, आप सोच रहे हो आप बिल्कुल mentally prepared हो एक life लाने के लिए, I think that's the right age when you should get pregnant. And whenever you decide to get pregnant, just visit a doctor. Exactly. Because हाँ, लोग कहते तो हैं कि पैदा करो, हम हैं पाल लेंगे, but I mean that's just a quote, I guess. That's the myth. The biggest myth in the world. I know. Yeah. So like only if you are mentally ready, I think that's the criteria for me. Biggest criteria. हाँ, तो I think तो when I was mentally prepared and my husband was, we both have to mentally prepared. It can't be just any. It can't be just the mother. Yes. I think the father has a big role too in pregnancy. और अब आजकल तो especially it's very important that fathers. Not just after bringing the kid, before also, because कई बारी कुछ situations handle out of control हो जाते हैं, handle नहीं कर पाते हैं. अब बहुत sick होते हैं. We don't feel okay. But also I think आजकल की जो women हैं, they are all working, so they exactly don't know how to sit at home and do nothing. While we are pregnant, तो वो भी थोड़ा सा difficult I think it messes your mind more than anything. I know. The working woman, really it takes a toll. So what was the role of your husband? जब आप pregnant थे, आपको कैसे कितना support मिला उनसे? So like in general my husband is very supportive, but when it comes to pregnancy, so you need like 100% support. सबसे. So the most important thing was like he was very understanding in terms of ki right now my body is going through so many changes. Mentally I'm not feeling well because I'm at home. I don't have to do anything. I cannot do anything. Also थोड़ा सा issue था that starting में baby की heart beat नहीं आई थी, like for 15-20 days. Though I thought कि I'll continue my job till like 7 months or so, but because of some issue heartbeat नहीं आई थी. I didn't knew I was pregnant and I like danced for
to 4 hours Yeah. in my heels while I was pregnant. Okay. So Yes. that was the issue. So when did you visit the doctor first? पहली बार आप कब? So I पता got to चला know आपको? on 4th of January that So you were 2 months pregnant, 3 months pregnant? 2 months. 2 months. Yeah, like 1.5 months I would say. Okay. Basically, so I didn't knew that I was pregnant, and I had this dream of that I'm pregnant or something, and I was going to gym. So I was like, okay, let's go and see if. So I took that kit of Test, urine pregnancy, test, hanji, and the next morning when I did, so I was like, oh my god, It was positive. yeah. How was the So- feeling? So I don't know what happened to me. Suddenly I started walking very slow, and then I Okay. realized, why am I walking like this? I think that's a myth ना कि pregnancy में कुछ नहीं करना have to है, walk बहुत very धीरे-धीरे slow. चलना I है. know. Yeah. So, like my husband has partied a night before for New Year's. So he was like, मतलब हमने जब बताया तो nobody could believe कि अच्छा, like, you know, because people were thinking that there is some issue that कभी नहीं हो रहा है 5 सालों में. 5-6 years, and so people have started saying go and meet the doctor, but Yeah. we knew that there wasn't any issue. It's just that we were not I think prepared. it is the people around us. I think वो बहुत ज़्यादा pressure बना देते हैं. I think क्योंकि उनका काम ही उनको यही लगता है ना शादी होगी तो अब तो next goal is बच्चा only. And I think आजकल आप they are not satisfied with one thing. पहले शादी कर दो. पहले होता है ना कि बच्चा स्कूल पढ़ ले, फिर जॉब का प्रेशर, फिर शादी का प्रेशर, फिर एक बच्चे का प्रेशर, फिर दूसरे का प्रेशर. तो I mean they won't stop. Yeah. मेरा और मेरे हस्बैंड का है कि we were like कि हम नहीं, अपने पेस से अपने पेस से चलेंगे जब तुम्हें बेटर फील हो. इनफैक्ट ही told me कि जब तुम्हें बेटर लगे कि you can do it now, because I will be there obviously, but ultimately it's you. Yeah, of course. आपको ही deal करना है Exactly, situation के everything. So how was it जब आपको पता चला कि आप pregnant हो, आप गए डॉक्टर के पास और उसने बताया cardiac activity जैसे ने बताया ना नहीं आई है. हाँ. So what was the feeling? Do you think you might lose the baby? What was the feeling? कुछ आपको डर लगा? I mean उस समय तो it was a very shattering moment for me. Yeah. Because मैंने plan किया था, and then पहले तो मतलब So it was a planned pregnancy. Yes, it was planned pregnancy. But then जब planning हुआ और I got to know कि मतलब ऐसा है, तो though she told me, my gynecologist, she told me कि मतलब it's fine, कुछ ऐसा issue नहीं है. She has given me some medicine starting with folic acid and everything. Yeah. Also before planning I went to her that now I would be planning, so she has already given me some medications. And so I think everything. this is very important thing that I would like to discuss here कि pre-conceptional folic acid is very very important nowadays, especially जब neural tube defects इतने बढ़ गए हैं. आप भी गए थे pre-conceptionally, आपके भी डॉक्टर्स ने आपको सप्लीमेंट स्टार्ट किए थे. लोग समझते हैं कि दवा खाने से अरे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड ये तो एक अलग एक बात है. बल्कि फर्स्ट 3 मंथ पहले कुछ नहीं खाएंगे, डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे. जैसे आप ये नहीं, बहुत बड़ा मिथ है, लोग नहीं जाते हैं, स्कैन नहीं कराते हैं. सो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट फर्स्ट 3 मंथ से होता है बच्चे का, एंड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड इसके इंसिडेंस बहुत बढ़ते जा रहे हैं. अब ब्रेन में आपने देखा होगा बच्चे कितने मेंटली रिटार्डेड हो रहे हैं, दे हैव टू गो टू थेरेपीज, डाउन सिंड्रोम बढ़ रहा है. ये सब इसीलिए क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो और you're not got a proper counseling before conception. तो ये आपने बहुत अच्छा एक point बताया that you went to the doctor, she started you on folic acid, and then again you went, जैसे ही आपका positive test आया, तो it is very good that you went. Because of the lifestyle changes, we are living in, I think it's very necessary to before planning anything. And I think आजकल सब कुछ plan करके ही we should do. Correct. I just said previously कि आजकल बच्चे लोग 1 या 2 कर रहे हैं. Exactly. तो जब when you are doing a thing, it's an event now. Pregnancy is an event. तो आप जब वो कर रहे हो तो आपको you should enter into it with proper preparedness. Proper preparations. है ना, एक आपको चाहिए, आप काउंसलिंग करा लो, आप एक बार विजिट कर लो, टेस्ट करा लो कि आप बिल्कुल फिट हो, your body is fine to hold the baby, and then you enter into this pregnancy. So जब आप गए फिर cardiac activity कितने दिन बाद आपके डॉक्टर ने फिर आपको बताया? It took 1 week to come back. Yeah. तो मतलब when it was there, now everything is fine. Yeah. So then what was the feeling कि अब chalo, I am pregnant, I mean, I have a life in my tummy. So how was that feeling? I mean, frankly उस समय मुझे I got very emotional. Yes. कि now everything is fine, and now I have to do every
थिंग जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है Correct. फॉर माई बेबी. ना देन आई वाजंट थिंकिंग अबाउट एनीबडी एल्स. Yeah. Throughout my pregnancy, I did not, frankly of speaking, I did not think about So anybody did you else. read any literature, or how did you do your preparedness? Yeah, I read like quite some books and articles also. Like my husband used to send me articles. Very mindful, And- because people don't do this Normally, normally. he does that. And one of my friend was also pregnant, so Yes. at the same time, so we used to discuss कि आज क्या हुआ, क्या तुम्हारी डॉक्टर ने बोला, what are the Yes. things, कैसे बच्चा आता है, मतलब what is the all process and everything, कि कुछ भी हुआ तो डॉक्टर भी जो बताते थे उसके साथ साथ I too was like prepared beforehand. Yes, beforehand. कि अच्छा okay अब next And what क्या was the है? role of your family? Like, did your mother-in-law, took part, or your mother, for that matter, took part in your journey? आप कुछ समझाते हैं ना, सब लोग जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो कि ऐसे ऐसे करो, ये खाओ, सुबह उठ के ये पियो, इतने बजे सो. So how was your journey? Did you also face any of that? हाँ, मतलब that was there obviously. Like I mean, I would say कि कभी कभी बहुत ज़्यादा लगता था कि it is too much. Yeah. Okay, let me be me also. I need my space and all that. But yes, in terms of that, my in-laws and my parents, they both are like कि ठीक है, give her space. She's मतलब smart enough to figure out कैसे क्या करना है. When my father-in-law used to do this कि every day जाते थे मेरे लिए 2 नारियल का पानी लेके आते थे because मुझे पीना होता था. 2 नारियल का पानी I need to have throughout my pregnancy. तो वो हर दिन मेरे लिए morning में ला करके रख देते थे. So you had a good support system. Yes, very good support system. I think it is very important in pregnancy. It is very important. I mean, without them, I don't think so. मैं जैसी person थी, मतलब would have survived ना. Because अभी mentally भी बहुत challenging हो जाता है. आपकी body इतने changes से गुजर रही होती है, not just physically, mentally also. Studies have also shown कि आपका cerebral cortex change हो रहा होता है. सब कुछ हो रहा है. Emotionally इतने vulnerable हो जाते हो कि हमने COVID में देखा ये चीज़ कितनी ज़्यादा कि जो families अकेले थी, the COVID babies, the COVID mothers, but they faced depression, postpartum depression, anxiety so much because they were alone. They had nobody to tell, no support system. So I think this is very, very important. If you had a good support system, आपकी pregnancy would be very happy pregnancy that way. हाँ, that way. So my pregnancy, मतलब in general, my pregnancy was very good. And people were there to support me in everything. And how was the cravings? I think that's the thing जो बहुत होती है लोगों को. I used to crave a lot for Chinese because okay. One day I was watching movie and with my husband. So which movie did you watch? So one thing I did was कि I did not watch any content जिसमें मार धाड़ हो, but though he was too much into it, Avengers and हाँ इस तरीके का. So वैसा बहुत मतलब मैं नहीं देखती थी. I used to watch जो पुरानी बॉलीवुड मूवीज होती थी, अच्छी फैमिली मूवीज, वो ज्यादा हैप्पी गो लकी. हाँ, आई यूज्ड टू वॉच हम साथ साथ वैसी वाली मूवी, कभी खुशी कभी गम एंड ऑल दैट. बट एक्चुअली इसमें भी आई वुड लाइक टू ऐड कि बल्कि ये भी बोला गया है कि गुड कंटेंट क्रिएट्स सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, तो बच्चे को भी बहुत हैप्पी करता है. एंड जबकि हॉरर और ये जो नेगेटिव जो कंटेंट होता है, दे आल्सो एक्चुअली हार्म द बेबी इन द सेंस कि वो आपके अंदर भी डर पैदा कर रहा है, स्टेरॉइड हार्मोन्स रेज करा रहा है, so that is also harming the baby. So like इसीलिए तो पहले सब हमारे in-laws और सब कहते थे कि आप हॉस्पिटल मत जाइए, आप प्रेग्नेंट है, आप किसी के फ्यूनरल में मत जाइए. there were so many restrictions. हाँ, because कहीं ना कहीं वो mentally हमें harm करता है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, and in turn बच्चे को harm कर सकता है. And like I used to listen to Sister Shivani a lot. Yeah, she's Brahma Kumari. हाँ, Brahma Kumari, and I think that has changed quite a lot in me. मतलब अभी इनफैक्ट अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे कुछ देर में, लाइक गर्भ संस्कार और वो जो बताया जाता है, पॉजिटिव एनर्जीज आल्सो प्ले अ वेरी गुड पार्ट ना इन योर इन द जर्नी. हाउ डिड यू फील जब आप सुनते थे उनको? हाउ डिड यू फील?
मतलब फील एज इन जब मैं सुनती थी आई कुड रिलेट टू इट कि यू नो हाँ मतलब इफ वी आर वॉचिंग समथिंग जो पॉजिटिव है जो सुन रहे हैं आई यूज टू फील गुड अबाउट इट. एक कुछ ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हुआ था मेरे घर में. मेरी वन ऑफ माई रिलेटिव तो शी टू वॉज प्रेगनेंट बट उनका कुछ इशू आया था तो लाइक शायद बेबी के हार्ट में छेद या ऐसा कुछ था तो मतलब उनका 7 months पे डिलीवर करना पड़ा था. हटाया था उस बेबी का हुआ था मिसकैरेज. तो दैट वाज लाइक वेरी शॉकिंग टू मी. Disturbing, yes, especially when you are pregnant. Disturbing, yes. And I got so scared कि for 2 or 3 nights I was like कि I used to just pray to God every night that you know if I've done something right in my life, save my kid. Save my kid. That so was the do you most think important when you become a mother your priority change? आप ज़्यादा सोचने लगते हो अपने बच्चे के लिए. जैसे अभी आपने कहा ना कुछ हो जाए मेरा बच्चा सही रहे. You think yourself secondarily है ना. आप बच्चा is the first priority. मतलब आपकी I think आप एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया था which is also not right I would say. But एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि मेरी mental health मेरी you know physical health से ज़्यादा important मेरा बेबी हो गया था. तो मतलब I don't think so it's right. I don't know. हाँ because अब you are right कि हमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडियन मदर्स में बहुत ज़्यादा है कि हम अपना ईगो बच्चे से तो अटैच कर लेते हैं. बहुत ज़्यादा. मेरा बच्चा फर्स्ट था, मेरा बच्चा चलना नहीं शुरू किया पहले उसका चलना शुरू. मेरे में कमी कैसे हो गई. लाइक दे टेक इट ऑन देमसेल्फ. अरे वो बच्चा है उसकी अपनी एक पेस है. लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं है. यू नो वहाँ पे भी दे ऑलवेज टीच कि आपकी आइडेंटिटी अलग है, बच्चा आपका अलग है. है ना. आपको केयर करनी बट उसको इतना भी अपने ईगो से नहीं जोड़ना है कि जैसे आपने कहा कि आपकी मेंटल हेल्थ कहीं भी थी एंड यू वर जस्ट केयरिंग फॉर द किड. यू नो किड्स आर मोर स्ट्रांग देन वी थिंक दे आर. they are better survivors than we are. I know they are way more stronger than we think. Strong, yes. And अपने को प्रायोरिटाइज अगर आप करोगे which will in turn you know help the baby see कि हाँ my mother is very strong and the kid will learn from you. So I think अपने आप को प्रायोरिटाइज तो करना ही है. But I think you forget. We tend to forget, and it's very common. Not just you. Even I also. I am a mother. I also tend to forget this. बहुत हमारे mothers ने भी ऐसे ही किया था. You know, they used to leave their careers. They used to leave everything just for the kid. You know, but I think this should not be done. I don't think it's right. Yeah, I mean to some point obviously ऐसा नहीं कि आप selfish हो जाओ, but to some point आपको अपनी एक individuality भी maintain करते हुए चलना चाहिए. I mean I think mental health is the priority. It should be the topmost priority. Yes. Because अगर खुद का आपका घड़ा भरा रहेगा तो correct, वो वाली चीज हो जाती है तो आप दूसरों को कैसे करोगे. तो I mean वो एक point पे था but there my husband comes in and he pitched me कि you know you should start taking off. अगर तुम्हारा ही इतना रहेगा that you are like कि कहाँ गया हमारा बच्चा and मतलब 6 बार मालिश कर रहे हो. You were a paranoid mother. I am. Okay. At least I used to be back then. तो I was like कि नहीं मतलब everybody should sanitize. कोई छुए नहीं, कोई खिलाए. Sanitize properly. Like मैं दिन में 2 बार sanitize करवाती थी. सारे पोछा भी लग रहा है अगर तो पूरा proper Dettol में everyday bed sheet should change हो रही है and everything. So I become like very I don't know. No, it happens. It happens. It's a part of motherhood. I know, but when you see the kid in your hands, I think you cannot think about anything else. Yes. That becomes a whole world. I know. कि सब कुछ इसके लिए करना है. When you earn, you like कि नहीं हाँ, let's save for the kid, let's do this for the kid. Everything is around kid only. Around the kid only. Yes, very like correct. Wanted to go for normal delivery, but my gynecologist said, and the way she said, पागल हो क्या? इतना healthy बच्चा, you'll die. So how was your last trimester? जो last का 3 महीना होता है ना, when you know the belly is so big, and how was it? Was it difficult? So frankly speaking, I think I did like 2 or 3 things like full day में जो मैं करती थी. नींद तो नहीं आती थी. I used to just pee, eat and drink. Okay. I used to मतलब मुझे भूख बहुत लगती थी, तो I used to eat a lot.
and like all the good things, पूरा fruits का बोलो चाहता था. One that is more important. खाओ तो but क्या खाना है? हाँ, तो I mean नारियल पानी है, बहुत सारे लोग सोक करके nuts morning में वो रहता था. Then नारियल पानी I used to have. Then I used to do little bit of meditation also. So I think. Did you exercise in the entire pregnancy या फिर? No. उन्होंने बिल्कुल मना किया था कि ये सब तो नहीं करना है. हाँ, मुझे stairs पे भी बहुत ऊपर नीचे नहीं करना था. But I used to do meditation and walking must था मेरा. हाँ, तो I used to take sunlight also. I used to sit for half an hour. It is very important. This thing that you said ना, vitamin D, ये तो इतना ज़्यादा important है mothers में especially कि अब बच्चा भी है उसको भी nutrition जा रहा है और pregnancy में सबसे ज़्यादा calcium bones से आपका बिल्कुल एकदम निचुड़ जाता है एंड मदर्स लैंड अप इनटू ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस इतना ज़्यादा. तो टेकिंग सनलाइट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप दैट यू टुक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, आई थिंक फॉर मी आल्सो एंड फॉर माय बेबी आल्सो फॉर 6 months तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि हर दिन सुबह की 5-5:30 बजे की जो धूप 6 बजे की होती है ना, तो आई टू पुट हिम फॉर लाइक लोग बोलते थे आई डोंट नो अभी मालिश मत करो धूप में काला हो जाएगा एंड ऑल दैट. पता है ना ये भी काले गोरे का कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है. I know. They are so obsessed. There are people who मतलब आते हैं पेशेंट मेरे पास कि मेरी मदर इन लॉ कह रही सुबह आप दूध पियो और बच्चा सफेद गोरा होगा. रसगुल्ला खाओ. हाँ, रसगुल्ला तो is a new thing. I know. Yeah. And सुबह आप मिश्री खा लो, मक्खन खा लो, anything white आप सुबह खाओ and आपका बच्चा गोरा होगा. मैंने कहा ऐसे गोरे होने लगते बच्चे तो फिर क्या था फिर. I mean that's hereditary, but ये सब होता था कि ये भी होता था आपके साथ भी होता था. हाँ, मतलब मुझे भी बोला जाता था like मदर इन लॉ तो नहीं बोलती थी बट चाची ताई जी सोसाइटी एवरीबॉडी यूज्ड टू कम एंड टेल मी कि ये करो ये नहीं करो. मेरा बस ऐसा रहता था सुनो एक कान से निकाल दूसरे कान, बिकॉज आप सबका नहीं ले सकते हो. आप खुद उस फेज में होते हो जहाँ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप वो लर्निंग फेज में होते हो. सो एवरी डे एवरी टाइम आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हो. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगता है ना, आपको सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है, ज्ञान कम चाहिए. एग्जैक्टली. लोग आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन ज्यादा. आप सब बी देयर सपोर्ट द मदर. आप उसको बार बार इंफॉर्मेशन से लोड करोगे तो फिर वो सपोर्ट नहीं, वो स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है. एंड वही मैं बताना आपको मेंटल हेल्थ प्रेगनेंसी में भी अब आजकल तो इट्स बिकम अ बिग इशू. प्रेगनेंसी आफ्टर प्रेगनेंसी इवन बिगर. तो ये इट्स बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट आर अराउंड अस जो हमें बार बार इतना होवर करती रहती हैं. सो हाउ वाज योर डिलीवरी, उस बारे में बात करते हैं. So जब मुझे बोला गया कि now is the time and you need to deliver planned delivery. Everything, yes. Okay. तो she said कि मतलब कभी भी कर लो. तो like 23rd अगस्त was जन्माष्टमी. तो it was like हाँ तो मुहूर्त निकला था 22nd अगस्त. No we मतलब मुहूर्त पे नहीं हम बहुत बिलीव करते थे. And me and my husband, though my mother-in-law was like कि कर लेते हैं थोड़ा समझ लेते हैं मुहूर्त का, but we have asked our doctor because we trusted her like anything. And we like कि आप बताओ कि कब करना है. I mean they know the best. Yeah, correct. Until तब तो अंदर है हमारी कंडीशन क्या है, what is the best time to do. तो she suggested us to go for like C-section on 22nd of August. Okay. तो I mean वही 6 बजे किया and it was like I could hear the noise. I couldn't feel obviously anything. But you could hear, no? I could hear. Yeah, but the moment he cried, I asked her, "Is that my baby?" And she's like, "Yes." Okay. And how was that the feeling? Much. I had goosebumps. I don't know. उस समय की जो feeling थी, I think I've never ever felt something like. Though I was in pain. और उतना mind भी उतना conscious नहीं होता है because of the epidural and but still I mean जैसे ही मुझे निकाला गया and the person came to me and he showed me कि yes this is your baby and have you seen I like boy and girl. So he asked me and I was like boy. So the moment they took me out they have like closed me and और baby को उन्होंने ICU में जहाँ पे भी मतलब for observation रखते हैं. And the moment I got out of the operation theater, I like, where is my baby? कहाँ ले गए उसको? कहाँ ले गए? आपने नहीं पकड़ रखा है ऐसे? My husband like, no, he's safe और वहाँ पे है. So I mean that was, and the first time I took him into my arms, the doctor gave me, I started crying like anything. So अब बेबी तो आ गया, उसके बाद की जर्नी कैसी थी पोस्टमार्टम की?
So like 6th day मेरे को हो गया था कि I should get discharged and everything. So जब घर आए तो सब कुछ डेकोरेट था and it was very good feeling and everything was good. But I think उससे पहले तो everybody was taking care of the baby and everything. Hospital में है तो मेरा भी अच्छे से वो रख रहा है. But जैसे घर पहुँचे तो वहाँ पे now you know, हाँ, the top priority was the baby now. Baby, now you know कि that only you have to take care of yourself. हाँ, the baby, सब कुछ diaper changing से everything. Sleepless nights. Yeah, तो I used to at times fight with why don't you change this diaper? Yeah, you tend to get ना बिल्कुल वो गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हो कि अरे और कोई भी तो help कर दो मुझे मैं अकेले क्या क्या करूँ. And it's like एक बार भी पी किया है तो you have to put a diaper. तो it was like कि एक दिन में at times 20 से 22 diapers हो जाते थे. तो आप अकेले करते थे? Your husband helped you in that? हाँ, my husband helped me. My mother-in-law was there. But रात में see वही मैं as a mother बहुत ज़्यादा protective हूँ. तो it's like नहीं मैं करूँगी तो अच्छा मैं feed कराती हूँ, massage करती हूँ. I'll do everything. You just take care of the baby for some time and then give it back. हाँ, but 15-20 मिनट के लिए अपने पास में रखो उसके बाद हाँ मेरे सामने खेलो और ये फिर मेरे को दे दो. That was the thing. So what kind of mother are you if you see that way? I'm very fuzzy. I would say fussy कह लीजिए या फिर you know I'm very protective about him. Everything I need to have a proper discipline. Like he has to sleep this time. At times my friend get angry at me. कह रही तुम्हें क्यों इतने बजे जाना होता है क्यों करना होता है. It's okay अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया. I'm like कि no for me it's like कि he's my responsibility. जब तक वो एक grown up नहीं हो जाता where he could take his own decisions. Yeah, correct. अभी वो मेरे पे है तो once I develop a certain habit it will help him later on. Yes. So I think. So how has the baby changed you as a person? Like पहले like used to party and everything. उसके बाद फिर जब ना बच्चा आ जाता है. Then तो I was like very careless and I was like very selfish also. Your mood is not okay. Go to hell. Yeah, but now I have become quite selfless. I would say I have developed patience, persistence. You have to be patient. I think motherhood is all about patience. Patience, yes. मुझे बहुत ज़्यादा patience. I was not like this person. Yeah. I think if you have met everything on time, schedule. Everything on time. Everything has to be proper. Yeah. It can't be like कि अरे बिना धुले कपड़े कैसे बना दिए. ये खाने में Any incident जिसमें आपको इतना गुस्सा आए आपने बिल्कुल just batch the helper या कुछ इस तरह कुछ incident? Yes, I did that once with my cook. So I have asked her to put मूंग की दाल की खिचड़ी and all for Kabir. I think he was back then 1 year old. Okay. And उसको पनीर से मतलब डेयरी का एक होता है ना टाइम होता है आप हर वक्त डेयरी नहीं दे सकते. तो अगर मैंने उसको मिल्क दिया एक पोर्शन में and I've given him curd तो मैं उसको पनीर नहीं दूंगी. तो I was very particular about these things. तो I asked her और उस दिन मॉर्निंग में भी मैंने उसको एवोकाडो सैंडविच के लिए बोला तो उसने आई डोंट नो व्हाट शी डिड और उसने प्लेन बटर लगा करके और वैसे एंड आई एम लाइक उससे तो मैं फ्रस्ट्रेट थी. एंड देन मॉर्निंग नाइट में भी जब खिचड़ी बोली तो उसने उड़द के दाल की खिचड़ी बना दी थी. उड़द इज हेवी. उड़द इज वेरी हेवी. और रात में मैं उसे बहुत लाइट देती थी. सिंपल मूंग दाल की खिचड़ी विद हींग जीरा घी का छोका हुआ. गेट गैसी उड़द की दाल. एग्जैक्टली. एंड मतलब ब्रोकली वगैरह जो भी रहता था और उसने पता नहीं क्या डाला उसमें क्या किया. ऑल्सो शी पुट दैट हरा मिर्चा इन इट. ओ गॉड. And मैं हमेशा टेस्ट करती हूँ before giving it to Kabir. And that was the time I was like get out. मुझे चाहिए नहीं तुम मेरी हेल्प करने आई हो. How can you give जो मैंने बोला है. And she's like खत्म हो गया था. मैंने कहा तुम्हें मुझे बताना चाहिए था खत्म हो गया. You cannot give this to my baby. So like everybody tried to calm me down but that was the incident. And from then मैंने ही ले लिया मोर्चा संभाल लिया कि I will cook for him. Yeah. So it's like that. And any funny incident if you think of a kid कुछ ऐसा कि he tested your patient to some other level. Like ऐसे तो बहुत funny incident हुए थे but once this happened कि मैंने उसको सुसु के लिए किया कि पी कराने के लिए you do that सी वाली thing ना and he did not do. तो I asked my husband कि you know just put his nappy वो रहता है ना आप पहना दो और I'll come, I'll just go and wash my face. The moment he picked up, he did both potty and susu on it. And he's
what the hell? So it was like हाँ. that was very Very funny. very funny. And And did your husband get angry? कि अरे हाँ, and the यार, susu goes directly on his face. oh my god, so that was very funny. Like Yeah. aim is very good. He was like हाँ, तो aiming, fathers was को he कुछ तो aiming? participate I करना पड़ेगा know. ना. And he was like कि ये क्या है? Like see, you always say to me ना कि I'm very focused and my aim is very good. See, your child is also like that. So that was a very funny Yeah. incident. So like इतनी सारी बातें हुई and it was very good to talk to you. But one thing I would like to ask is कि आप क्या suggest करते हो एक woman को when she's planning or thinking about so being a doctor, आप क्या suggest करते हो कि क्या lifestyle में change आने चाहिए? Yeah, so आप हमें सबको पता है कि lifestyle आजकल की so sedentary, you know, Yeah. and also the kind of food that we take in, it's packed. Everything is packed in a tin bottle or in a in a package. Yeah. तो ये बहुत ज़्यादा harm कर रहा है हमारे lifestyle को और इनफैक्ट प्रेगनेंसी इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है. जैसे मैंने पहले भी बताया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के रेट बहुत बढ़ गए हैं. प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन के रेट, शुगर के रेट, लिवर में प्रॉब्लम्स सब प्रेगनेंसी में उभर के आता है जो कि पहले कुछ भी नहीं होता है लेडी को. जैसे ही लेडी उस स्ट्रेस से गुजरती है प्रेगनेंसी की उसको सारी वो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं. सो आई थिंक बिफोर स्टेपिंग इनटू प्रेगनेंसी यू first have to visit a doctor for a preconceptional counseling. Okay. It is very important, especially nowadays. Things have changed a lot. अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप बस प्रेग्नेंट हो जाओ फिर आप 3 महीने बाद चले जाओ डॉक्टर के पास. I think things have changed a lot. You should go to a doctor with your husband. आप you get yourself tested so that आपको पता रहे कि if you are undergoing any kind of nutritional deficiency और आपको कोई hormonal imbalance है, you can get that corrected by proper diet and also with proper exercise, whether it be yoga or gym, anything, any kind of physical activity. 30 to 40 minutes of physical activity daily is I think essential for in general for a woman's health. You know, and then you can step into pregnancy. Also the gynecs start you on folic acids, like ऐसे पहले भी discuss किया हमने. 3 months prior to conception आपको start किया जाता है. It is again very very important. Now important component called choline has also come into picture. कि that is very important for the brain development of the kid. So आपको gynec वो भी start कर देती हैं before you step into. So I think both the father and the mother should get themselves tested, get proper counseled, not just by the doctor, by the nutritionalist, by a lactational counselor who will prepare you for your pregnancy in every way, mentally, physically. आपको एक पूरी counseling की ज़रूरत होती है, and then you can easily step into pregnancy. So I think it was a very good conversation that we had. It was very Thank you so much for being here with us. Thank you for having me here. And I think we'll continue this journey of talking to mothers. I think by talking to various mothers हम बहुत अलग अलग तरह की motherhood की journeys सुन पाते हैं, experience कर पाते हैं. And I being a doctor, not just look at the technical aspect of it, but also human side of pregnancy. So that's all for today, and we'll meet you in the next episode with a new mother and a new journey.